हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GoPrep। माय नेम इज अनुरीत एंड आई एम अ फिजिक्स ट्यूटर एट GoPrep। अभी आप लोगों का GTSC का एग्जाम हुआ था, राइट? तो आई होप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ फिजिक्स सेक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है पार्टिकल का, ठीक है, दैट इज मूविंग and what does the graph indicates, ये हमें बताना है। As you can see, this is the graph with increasing slope, है ना? ये ग्राफ कैसा है? कर्व है जिसकी स्लोप क्या कर रही है? इंक्रीज। अब स्लोप क्या कैसे पता करते हैं? स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है, दैट वी नो, है ना? ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। अगर दो स्ट्रेट लाइंस हो, लेट्स से ए एंड बी, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो किसका स्लोप ज्यादा है? जिसका एंगल विद द एक्स एक्सिस ज्यादा होगा, मोर इज द एंगल विद द एक्स एक्सिस, मोर इज द स्लोप ऑफ द लाइन। So let's say A line θ1 एंगल बना रहा है और B line θ2 एंगल बना रहा है. So as you can see, θ2 is more than θ1. So slope of B is more than A. So how to compare slope in case of a curve? So here you need to draw a tangent at, let's take 2 points. Let's take this point. यहाँ पे एक tangent बना लेते हैं. Let's draw a tangent over here. ठीक है, line which touches this curve. ठीक है, ऐसे, और ये यहाँ पे tangent बन गई. ठीक है, so as you can see, the angle made by these two lines with the x-axis, let's say this is the one θ1 and this is the angle 2. ठीक है, so as you can see, θ2 is more than θ1. So slope of this graph is increasing. So this is increasing slope graph and slope of displacement time graph is velocity. So ये क्या बता रहा है ये ग्राफ? कि velocity of the particle is increasing. So what is the correct answer? Velocity of the particle is increasing with time. What about the acceleration of the particle? No, अगर velocity is increasing, how can acceleration be zero? Acceleration is rate of change of velocity. So if velocity is increasing, then acceleration is there, right? So velocity of the particle is decreasing with time. This is incorrect. Particle is moving with constant velocity. This is also incorrect. So here is the next question on your screen. A man weighing 60 kg runs along a rails with a velocity 18 km per hour and jumps into a cart of mass 100 kg resting on the rails. तो आपको बताना है कि जो कार्ट है वो कितनी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगा. दैट वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट. फाइन. सो लेट्स इमेजिन द सिचुएशन. सबसे पहले मैन, its weight is 60 kg. Always visualize the things. ठीक है, फिजिक्स में क्वेश्चन करने से पहले उसको आप पिक्चर बना के देखो उसका. ठीक है, उसको विजुअलाइज करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 60 kg and runs along the rails with the velocity of 18 km per hour. So this is the velocity. So let's convert this velocity into meter per second. As you can see, options में meter per second है. So 18 into 5/18 करेंगे हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए. So we get the velocity 5 meter per second, man's velocity. And the cart rest कर रहा है, तो cart is not moving. So cart का velocity है initially 0. ठीक है, u ले लेते हैं उसको. Initial velocity of the cart is 0 and its mass is 100 kg. So this is the initial situation. What about the final situation? Finally, the man jumps into the cart. तो बीच में बैठ गया. तो what is the total mass of this man plus this cart? 100 plus 60 kg. So this is 160 kg. Now these two together will move. Obviously बात है ना, कार्ट के अंदर अगर मैन जाके बैठ गया है तो these will move together, right? So we need to find what is the velocity. ये velocity कितना होगा ये हमें find करना है. तो as you can see, there is no external force acting. So when there is no external force acting, external force is 0. So change in momentum upon time is equal to external force. This is Newton's second law. So delta P by t is equal to 0. That means delta P is equal to 0. Delta P क्या है? Change in momentum. So change in momentum is 0. So change in momentum is 0 means momentum is conserved. That is, initial momentum should be equal to final momentum. So this is how we are going to solve the question. यहाँ पे हमारा initial momentum देखो सिस्टम का क्या है. Initial momentum of the system is man का momentum plus cart का momentum. Initially cart was at rest. So momentum of the cart is 0. Momentum क्या होता है? Mass into velocity. Velocity of the cart is 0. So its momentum is also 0. So initial momentum total है 60 into 5. Right? So this is the initial momentum of the system. And what is the final momentum of the system?
final momentum of the system is 160 into v. Now we need to equate these two. Why? Because these two are equal. So initial momentum is 60 into 5, final momentum is 160 into v. ठीक है? So when you will solve this, you will get the answer 60 into 5 upon 160. Just solve it. हमारा आंसर कितना आएगा? C. This will be your answer. जब इसको solve करोगे तो you will get velocity is equal to 1.875 meter per second. So here is the third question. A body of density rho and volume v is floating in a liquid of density sigma. Then which of the following statement about the body is correct? That we have to find. So options अगर हम देखें तो true weight की बात कर रहा है. What is the true weight of the body? What is the true weight of the body? True weight of the body is mg. Mass is not given to you. So mass per unit volume is equal to density. What is the density of the body? It is rho. The symbol is known as rho. So as you can see, mass can be written as volume into density. So यहाँ पे लिख दो volume into density of the body into g. So this is the true weight of the body. This is true weight of the body. So true weight of the body is not this. This is equal to v rho g. And it is floating in the liquid of density sigma. So loss in the weight. Loss in the weight कैसे होगा? Okay, fine. So सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई body is there in the liquid, ठीक है? Then let's see what is the weight that is measured by the spring balance. Spring balance weight measure करेगा. तो कितना weight measure करेगा उसको find करते हैं. तो what are the forces that are acting on this body? I am not saying that this is floating or what. I don't know about this. ठीक है? Let's in general बात करते हैं. तो इसका weight एक तो mg इसके ऊपर force act करेगी, gravitational force in the downward direction. What else is there? It is displacing some liquid, so there will be a bind force. So let's say bind force. It is always acting in the upward direction as this is up thrust. So this is acting in the upward direction. What else is there? There is another force, that is tension. Because this spring balance will also apply some force on this, the block. So that force is known as tension. Great. As you can see, tension plus bind force, नीचे क्या लग रहा है? mg. As you can see, this block is not moving anywhere, है ना? कोई कहीं move नहीं कर रहा. Vertically it is not moving. So vertically net force should be equal to 0. So net force is 0. That means upward force is equal to downward force. Upward force is T plus B. Downward force is mg. Okay. So what is tension? Tension is equal to mg minus b. Tension is equal to mg minus b. So this is tension in the spring balance, and spring balance always measure the value of tension. Spring balance आपको true weight बताएगा या फिर apparent weight बताएगा, वो हमें टेंशन का वैल्यू बताएगा. ठीक है? जो भी उसके अंदर टेंशन होगा वो यहाँ पे इस मीटर में दिखाई देगा. So what is the value of tension? mg minus v. So this is the true weight. This is the true weight, and this is the weight that is measured by the spring balance. So this is known as apparent weight. That is the false weight. Okay? This is the false weight. So what is the loss in the weight? It is equal to bind force. So this is the loss in the weight. Loss in weight. So in this specific case, the body is floating. If the body is floating, so what is the condition for floating? Body floats when the bind force is equal to weight of the body, right? When bind force is equal to the weight of the body, so that body floats. Either it is fully immersed or it is partially immersed, है ना? It's not required कि वो कितना अंदर है पानी के या फिर पूरा का मतलब water है तो liquid, any liquid. So it can be partially inside the liquid or it can be fully immersed in the liquid. So bind force is equal to mg. That is condition of floating. Great. So in this case, as you can see, if b is equal to mg, then T will be equal to 0. So tension in the spring balance will be equal to 0, right? Or in general, आप simple as a question आता है, तो just think about loss in the weight is equal to the bind force. Loss in the weight is equal to the bind force. Now bind force is equal to mg. So what is the loss in the weight? It is equal to mg. So true weight minus mg is 0. So यहाँ पे कितना weight measure करेगा उसका? Spring balance, it will be 0. So apparent weight is 0. Okay, so fine. So its density is greater than density of the liquid. इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते अभी. ठीक है? First of all, density is greater than the density of the liquid. Density of the body अगर greater होता liquid से तो वो sink कर जाता. Body क्या करता? Sink कर जाता. So this is wrong. ठीक है?
बॉडी फ्लोट तब करती है जब उसका डेंसिटी लेस देन और इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से. दिस इज द कंडीशन. फ्लोटिंग के लिए दिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है. सो इन दिस केस आंसर इज सी. So mass 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy. The ratio of the magnitude of the momentum is great. So kinetic energy is equal to P square upon 2m. इसको use करते हैं. What is this? This is relation between kinetic energy and momentum. P momentum, K dot E is kinetic energy. कैसे आता है ये? Kinetic energy is equal to half mv square. Just divide and multiply it with m. So you will get mv ka whole square divide by m. So this is equal to p square upon 2m. So this is the kinetic energy. Okay. So ratio of their momentum आपको बताना है. kinetic energy equal है. ठीक है. So kinetic energy अगर equal है, so p1 square upon 2m1 is equal to p2 square upon 2m2, where m1 is the mass of the first body 1 gram and m2 is the mass of another body, that is 4 gram. And P1 and P2 are the respective momentums and we need to find their ratio. So हमें P1 by P2 find करना है. So P1 by P2 क्या होगा? As you can see from here, so P1 by P2 का whole square is equal to M1 by M2, right? This M1 यहाँ पे जाएगा और P2 नीचे आ जाएगा. So P1 by P2 is equal to under root of M1 by M2. So what is M1? This is 1, M2 is 4. So the answer is 1:2. 1 by root 4 is 1:2. I hope this is clear, right? So let's move to the next question, question number 5. So this is the match the column. Okay. In this, you have to match column 1 with column 2. Okay, a moving disturbance. A moving disturbance क्या होता है? Moving disturbance is wave. What is wave? Wave is the disturbance is traveling from one place to another place. That is known as wave. Energy is moving from one place to another place. Okay. So the correct answer for A is S. So A is S here and here. Okay. So what about the B? Propagation requires material medium. Okay. As you can see, column 2. ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव्स, ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन. तो मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? द वेव्स विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल. सो द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल. सो बी का आंसर क्या होगा? बी विल बी आर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इतना ही आपको सोचना था. लेट्स सी द अनदर ऑप्शंस आल्सो. परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? व्हेन द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग in the perpendicular direction to the direction of motion of the wave. If the wave is moving towards right, the particles are vibrating in the vertical direction. Like string में होता है ना, string में transverse wave बनती है. तो जो string के particles होते हैं, those particles are vibrating in this direction and the wave travels in this direction. So both are perpendicular. Motion is traveling in this direction and the particles in this direction. So this is transverse wave. Back and forth motion. So this is the definition of oscillatory motion. To and fro motion or back and fro motion about a fixed point is oscillatory motion. I hope this is clear. So let's move to the next question. So which of the following statement is true for displacement? Displacement क्या होता है? Okay, displacement और distance की बात करते हैं पहले तो. Displacement is always less than equal to distance. That we know, right? Displacement is equal to distance when the particle is moving in a straight line. Because the particle is moving in a straight line, then the actual path is the shortest path. And displacement is the length of the shortest path. Right? So in that case, displacement will be equal to distance. And in other cases, like if there is a curved path like this, a particle is moving from A to B, then the path length is more than this is the path length. This is your path. इसका जो length होगा, that will be more than the length of the shortest path. That is A और B को straight line से join कर दो. So as you can see, this vector indicates the length of this vector indicates the displacement and it represents the displacement. So as you can see, displacement is less than distance, right? Great. So can it be zero? Yes, it can be zero. Let's say a particle moves from A point and come back to again to A point.
comes back again to A point. So what is the initial point A? What is the final point? Again A. So initial and final point are same. So what is the shortest distance between initial and final point? 0, right? So this is basically displacement होता है change in position. Basically change in position. Position में change हुआ ही नहीं ना. Initial position भी A था और final position भी A है. So displacement in this case is 0. It can be 0. So it can never be 0. So this is wrong. आपको बताना है true statement क्या है. It can be 0. Its magnitude can be greater than the distance traveled by the object. Wrong. Its magnitude is always less than or equal to. It is shortest path between initial and final point. This is correct. It is a vector quantity. Agree. It is a vector quantity. It has direction as well as magnitude. So this arrow, this arrowhead represents the direction of the displacement. Okay. Great. Okay, fine. So that's it. That was the last question from physics section. Now the respective chemistry teacher will discuss the chemistry section with you. Hey guys, so I hope that you have rocked in your GTSE paper, and now it's time for us to discuss about the solutions and what you can say the paper analysis and the solution discussion of the slot 1 of your GTSE examination. Okay, so in this we are going to discuss about the solutions of chemistry only. ठीक है, तो चलिए जल्दी से आ जाइए, फटाफट से देख लेते हैं कि भैया हमने केमिस्ट्री में जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स क्या क्या होने वाले हैं. ठीक है, so this was the very first question from your chemistry section, and this says the phenomena of scattering of a visible light by the particle of a colloid is known as. तो हमें पता है कि अगर हमारी पार्टिकल साइज, मैंने आपको ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ा रखी कि अगर हमारा पार्टिकल साइज जो है इफ इट इज 1 to 1000 नैनोमीटर और अबव देन दिस, तो उससे क्या होता है कि जो लाइट आपके किसी पर्टिकुलर मीडियम से ट्रैवल कर रही है, सो इट विल इंटरैक्ट विद दोस मीडियम पार्टिकल्स in the how it will interact with them in the form of reflection, refraction and diffraction, जिस वजह से the path of the light will become visible, and that is known as the Tyndall effect that I have already explained you a lot of times, है ना. तो ये क्या कहलाता है बच्चे? टिंडल इफेक्ट कहलाता है. बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, एंड यू हैव ऑब्जर्व दिस फिनोमेना अ लॉट ऑफ टाइम्स. भाई कभी अगर आप गए हो सिनेमा हॉल्स में, तो अगर आप वहां पर प्रोजेक्टर वाला पार्ट हट गया है, पहले तो प्रोजेक्टर वाला पार्ट था, अब तो डायरेक्टली स्क्रीन पे चलता है. तो प्रोजेक्टर वाले पार्ट में अगर आपने देखा हो तो भाई मूवी चलती है तो प्रोजेक्टर से जब वो आपकी स्क्रीन पे अगर आपने देखा हो कि भाई वो चीज अगर प्रोजेक्ट हो रही है तो वहां पर आपको लाइट का पाथ विजिबल होता था. या कभी कभी अगर आपने देखा हो कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहां से अगर लाइट निकल रही होती है पेड़ों से, तो उसका पाथ एकदम विजिबल हो जाता है ना. क्यों होता है ऐसा? जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग. जो स्कैटरिंग हो रही है दैट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इस वजह से उसका पाथ विजिबल है. सो दैट इज टिंडल इफेक्ट. तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए. बहुत ही आसान. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये तो और ही खतरनाक आसान क्वेश्चन है. एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट. सो एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में हमें बताना है कि भाई इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है. अब सल्फेट का ओवरऑल चार्ज निकालने का ट्रिक मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, तो यहां पर अभी मैं ट्रिक का नहीं लिखूंगा कि ट्रिक कैसा है, बट आई विल टेल यू कि भैया चार्ज यहां पर क्या है. तो एल्यूमिनियम जो है मेरा मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. सल्फेट जो है पॉलीएटॉमिक आयन है, दैट इज ये अनायन है यहां पर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. नाउ वी नो व्हाट इज द वैलेंसी. इट्स नथिंग बट ओनली द मैग्नीट्यूड. सो द मैग्नीट्यूड विल बी 3, द मैग्नीट्यूड विल बी 2. क्रिस एंड क्रॉस you will get Al2SO4 whole thrice. So that is nothing but your aluminium sulfate. ठीक है, और इसको लिखने का तरीका यही होगा. अगर आप वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, क्रिस क्रॉस करेंगे तो वो सबस्क्रिप्ट बन जाएंगे. सो इसको ऐसे नहीं क्रिस क्रॉस करना कि भाई ये 2 इधर गया अब SO4 3, ये गलत है. पूरे के पूरे पॉलीएटॉमिक आयन पर आपको ये जो सबस्क्रिप्ट है वो लगाना है. सो दैट टेल्स यू देयर आर 2 एल्यूमिनियम आयंस एंड 3 सल्फेट आयंस, और वो जस्टिफाइड भी है. 2 एल्यूमिनियम आयन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक एल्यूमिनियम आयन रिलीज करेगा, 2 एल्यूमिनियम आयन 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे. एक सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारे पास 3 सल्फेट होंगे जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे. इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना. तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज Al2SO4 whole thrice. आसान, बेसिक, सरल क्वेश्चन.
कोई ज्यादा डिफिकल्ट या फाइट मारने वाला क्वेश्चन नहीं था। Let's move on to the next question, that is 25 ग्राम of water contain। अब जो बच्चे मेरे से मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि सुनील सर फॉर्मूला यूज करते ही नहीं है मोल कंसेप्ट में। हमें तो इतना पता है कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल एटम्स, आयंस फॉर आयनिक कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर कोवेलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो 1 मोल की जो क्वांटिटी है दैट इज नथिंग बट 602 हेक्सिलियन एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। और ये मैं प्रूव करवा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। दैट विल बी फर्दर इक्वल टू दी ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अगर एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास, और अगर आयोनिक कंपाउंड की बात हो रही है तो फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। ये तीनों चीजें इक्वल होती है, मैंने प्रूव करवाया हुआ है। अब आपसे उसने पूछा 25 ग्राम ऑफ वाटर कंटेंट कितना एटम के फॉर्म में पूछा है, तो हम किस किस चीज को रिलेट करा लेंगे भाई? हम एक तो ये चीज को रिलेट करा लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिलेट करवा लेंगे। बड़ी आसान सी बात है। तो हमें पता है कि 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या जिसको आप मोलर मास कहते हैं, 1 मोल का मास, जिसको आप मोलर मास भी कहते हैं। अब पहले तो आप क्या कर दीजिए, आप फटाफट से 1 मोल का, यहां पर अगर आपको मास निकालना है तो फटाफट से 1 मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं वाटर के, तो उसमें क्या हो जाएगा H2O, सो 2 हाइड्रोजन एटम, 1 का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 क्रॉस 1 प्लस 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16। सो दिस विल गिव यू 18U, है ना, 18 यूनिफाइड मास और 18 डाल्टन ये होता है, हमें पता है ये 1 मॉलिक्यूल का मास है। मैंने आपको बोला था अगर आपको 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स का मास लिखना है तो आप कुछ भी मत कीजिए, इस U को ग्राम से रिप्लेस कर दीजिए, और इसको भी मैंने इक्विवेलेंट प्रूव करवा के आपको दिखाया। ये सेम 18 मैग्नीट्यूड रहेगा, यूनिट विल बी ग्राम। एक फॉर्मुला यूनिट के बारे में आपको पता है, अगर आपको 602 हेक्सिलियन फॉर्मुला यूनिट्स का लिखना है वही वैल्यू लिख दीजिए, आगे ग्राम लगा दीजिए, ये इक्वल होती है वैल्यूज, ठीक है। आई हैव आल्सो प्रूव्ड दिस पार्ट टू यू, तो आप इसको उस वीडियो के मोल कंसेप्ट की वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। सो 6.02 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं 18 ग्राम में। 25 ग्राम में पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि भैया हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो x मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के। यूनिटरी मेथड, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है भाई। 602 हेक्सिलियन मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम के बराबर है, 25 ग्राम में x मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। सो आप इसको लिखेंगे 6.02 into 10 raised to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 25, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बाय 18 ग्राम, ये ग्राम से ग्राम, बाय बाय टाटा सी यू, है ना। ये वैल्यू आपको कुछ अप्रोक्सीमेटली आएगी 6.02 into 10 raised to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 1.39, और इसको जब आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल कम्स आउट टू बी 8.37 into 10 raised to the power 23। इतने मॉलिक्यूल्स आपके होंगे 25 ग्राम में, है ना। अब इसने बोला कि भाई एटम्स कितने होंगे हाइड्रोजन के, भाई एक मॉलिक्यूल में अगर आप देखते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 2 एटम्स तो है हमारे पास हाइड्रोजन के, एंड 1 एटम है हमारे पास ऑक्सीजन का। तो इतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन कितने होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स में जितने मॉलिक्यूल्स उतने ऑक्सीजन हो जाएंगे। भाई एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम है, तो 8.37 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? ऑक्सीजन के एटम की अगर मैं बात करूं, यहां पे ऑक्सीजन एटम की बात करूं, तो दैट विल बी 8.37 into 10 raised to the power 23 ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा सुनील सर हाइड्रोजन के कितने होंगे? भाई मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, उतने हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे आपके पास, सरल सी बात है ये, है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, 8.37 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 पॉइंट, ये रही यहाँ पे वैल्यू मुझे नजर ही आ जा रही है, ये मैच कर रही है इससे, हाँ, तो 16.722 into 10 raised to the power 23 ये वैल्यू यहाँ पे मैच कर रही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, सभी को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दौड़ लगाते हैं, आंसर विल बी डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, समझते हैं इसको। द मास ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कंसीडर्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली दी सेम। पता है हमें, है ना, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है ना। किलोग्राम्स में हम सेम लिखते हैं, लेकिन जब आप एटॉमिक मास यूनिट में इसको लिखते हैं तो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन द प्रोटॉन, एंड वी नो द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क होता है, प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है, एंड डाउन क्वार्क इज फॉर श्योर हैवियर देन अप क्वार्क, इसीलिए वो हल्का सा हैवी होता है।
So that is 1.08 and this is 1.0 U. It is expressed in the unified atomic mass. ठीक है ना, थोड़ा सा हैवी होता है. If the mass of neutron is assumed to be the half of its original value, whereas the electron mass is assumed to be thrice of its original value, the new atomic mass of C12 when compared to the actual value will be. तो भाई कितना होगा? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पहले यहां पे बात कर लेते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा. भाई ये तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हमने लिख दिया, मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया. सुनील सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एएमयू में कितना होता है? तो ये तो 0.0005 U इतना होता है. अब ये बहुत ही कम है. अब आप बोल रहे हो अगर आपने इसको 3 टाइम्स कर दिया, लेट सपोज इफ आई मेक इट 3 टाइम्स, स्टिल इट इज 0.0015 U. सो ये वैल्यू मेरे लिए नेग्लिजिबल है, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए. दिस वैल्यू इज नेग्लिजिबल फॉर मी. ठीक है, ये वैल्यू मेरे लिए नेग्लिजिबल है, मैं इसको अवॉइड कर देता हूं. क्वेश्चन में मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा इस चीज को. बाय टाटा सी यू. अब मैं किस चीज को कंसीडर करता हूं? देखिए C12 मास नंबर है, A इज इक्वल्स टू Z प्लस N होता है. मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो 12 आपके पास इसका मास नंबर है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे भाई? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 6 प्लस n. n का वैल्यू हमारे पास हो गया 6. ठीक है, ये हो गया हमारे पास n की वैल्यू. 6 न्यूट्रॉन है ना, बहुत ही बढ़िया बात है. अब मजे की बात यह थी कि हमारे पास इसके अंदर 6 तो क्या है? प्रोटॉन्स है ना, और हमारे पास 6 क्या है? न्यूट्रॉन्स है. और जिस वजह से जो टोटल मास नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, वो कितना हो जा रहा है? मास नंबर हमारा 12 हो जा रहा है. लेकिन अब इससे आप क्या इन्फर कर पा रहे हो कि भाई एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 U. लेकिन अब उसने बोला कि इनका जो मास है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. तो भाई अगर इसका मास जो हो जाएगा दैट इज, अगर इसका ये मास हाफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक न्यूट्रॉन का मास अगर 1 U है, तो अब उस एक न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 0.5 U हो जाएगा, है ना. तो आप इसको, मैं ओवरऑल वैल्यू को डिवाइड कर देता हूं, टोटल इसकी वजह से हमारे पास 3 यूनिट्स आ रही है. ठीक है, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट केस. ये पहला केस, फर्स्ट कंडीशन. नाउ मॉडिफाइड कंडीशन जो हमारे पास है भाई, ये मॉडिफाइड कंडीशन हो गई. मॉडिफाइड कंडीशन में जो आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा दैट विल बी ओनली 3 यूनिट्स. ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन दैट विल बी योर 9 यूनिट्स. ठीक है ना. तो अब सर सुनील सर क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आप क्या कर सकते हैं बेटा? आप देखिए यहां पर, ये हो गया 3 और ये हो गया आपके पास, अरे मैंने क्या लिख दिया, ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन. बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दिस. मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास 6 यूनिट्स का ही बचेगा. तो टोटल ओवरऑल जो मास नंबर हो जाएगा मेरे पास दैट विल बी 9, है ना, 9 होता है. अब आप बोलेंगे कि सुनील सर आप एटॉमिक मास को मास नंबर से कैसे रिलेट करवा रहे हैं? तो बेटा मास नंबर एक होल नंबर क्वांटिटी होती है. एटॉमिक मास आपका बेसिकली, क्योंकि वो किसी के रेस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है, उसमें आइसोटोपिक मास भी कंसीडर्ड होता है, तो इसलिए वो वैल्यू फ्रैक्शनल भी आती है ना. मास नंबर इज ऑलवेज होल नंबर. तो ये हमें एक रफ आइडिया दे देता है कि हमारा एटॉमिक मास समवॉट विल बी इक्विवेलेंट. ठीक है, उसके आसपास में ही होगा हमारा एटॉमिक मास. ठीक है, तो ये 9 आ रही है तो 9.20 या 9.10 उसके आसपास में रहेगा, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है. हम मास नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कितना चेंज आया हमारे पास, यहां पर कितना चेंज हमारे पास आ गया है? तो ये आप देख सकते हैं भाई, आपकी जो रिड्यूस्ड वैल्यू है ना, वो आप देख सकते हैं भाई, रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी हुई? रिड्यूस्ड हुआ है वो 3 यूनिट से रिड्यूस्ड हुआ है. सो चेंज अगर आपको निकालना है, यहां पर चेंज इन परसेंटेज अगर आपको निकालना है, तो आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं. भैया वैल्यू कितनी चेंज हुई? इनिशियली 12 थी, अब वो वैल्यू कितनी हो गई? अब वो वैल्यू घट के हो गई 9. तो टोटल चेंज कितना आया? 3 का चेंज आया. तो 3/12 इंटू 100%. ठीक है, सो ये हो जाएगा बेसिकली मेरे पास 300/12%. 2 की टेबल से इसको कट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 150, दिस विल कम आउट टू बी 6, और अगर इसको फिर फर्दर कट करेंगे सो दिस विल कम आउट टू बी 25%. तो कितना चेंज आ गया है सुनील सर? 25% लेस हो चुकी है ये वैल्यू. कितनी चेंज हो चुकी है? 25% ये वैल्यू चेंज हो चुकी है. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लीजिए. भाई आपने जो इनिशियल कंडीशन थी जिसमें 12 मास नंबर था उसको 100% मान लीजिए. 9 के केस में कितना आया उस वैल्यू को निकाल दीजिए, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तब भी यही 25% आएगा. और चेंज इन मास जो मैंने निकाला कि भाई पहले 12 था अभी 9 है, तो टोटल चेंज कितना है? सो चेंज अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100% विल गिव यू द चेंज कि भाई कितना परसेंट लेस हो गया. सो 25% लेस हो गया है. सो इसका आंसर होना चाहिए बी, एंड फॉर श्योर द आंसर इज बी. ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? आगे
अच्छा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को, बहुत ही मजेदार और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बहुत ब्यूटी है, बहुत खतरनाक ब्यूटी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ऑक्साइड्स ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट यहां पर जो है बेटा, वो एलिमेंट क्या मान लेते हैं हम, एलिमेंट हम क्या मान लेते हैं, अच्छा एमओ यहाँ दिया हुआ, तो एलिमेंट को हम एम मानते हैं, वरना मैं एक्स मान रहा था इसको, चलो एम दे रखा है हमें। सो टू ऑक्साइड्स ऑफ एन एलिमेंट एम कंटेन्स 57.1% एंड 72.7% ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि एक एलिमेंट की वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है, जैसे अगर आयरन की बात करूं तो Fe2+ फेरस, Fe3+ फेरिक, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं ना। अगर कॉपर की बात करें तो क्यूप्रस, क्यूप्रेग, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द सब्शेल कांसेप्ट, है ना, कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सब्शेल, उस वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारा कंसेप्ट क्या है कि इसके दो ऑक्साइड्स बन रहे हैं, मतलब वेरिएबल वैलेंसी तो शो कर रहा है। पहला ऑक्साइड मुझे बताया गया है कि वो एमओ है। अब पहला ऑक्साइड अगर एमओ है, ऑक्साइड बोला है ना, पर ऑक्साइड बोला है ना, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड बोला है, तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा ये तो 2 है। अब यहां पर जो सबसेट हमें दिख रहा है 1 और 1, ये 1 और 1 तब आ सकता है जब m का वैलेंसी भी 2 हो, तभी तो आप इसको कट करेंगे तो ये लोवेस्ट होल नंबर में आ जाएगा एंड दिस विल कम आउट टू बी m। तो ये जो यहां पर वैलेंसी है m की, दैट इज फॉर शॉर्ट 2 इस ऑक्साइड में। चलिए, पहले ऑक्साइड की कुछ डिटेल हमें दे रखी है, पहले ऑक्साइड की डिटेल दे रखी है कि पहला ऑक्साइड MO है जिसमें 57.1% ऑक्सीजन है। सरल सी बात है, कर लेते हैं। देखिए 57.1% उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन इन एमओ है ना। ये कुछ अपने मार्क्स के जैसा लग रहा है भैया, अपने 57.1% नंबर अगर मान लीजिए एग्जांपल, मेरे तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया आए, आपके भी बहुत बढ़िया आए होंगे अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, है ना। अब कुछ जो बच्चे मान लीजिए पढ़े नहीं, या कोई और रीजन हो गया नहीं पढ़ने का, भी कुछ भी है, उस बच्चे के मान लीजिए 57.1% आए, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं भैया, आपके कितने मार्क्स है बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, है ना, ओ के कितने मार्क्स है बाय टोटल एमओ। तो यहां पर हम यही चीज अप्लाई कर लेते हैं, सरल सी बात है ना। देखिए मुझे ऑक्सीजन का मास पता है, सभी को पता है ऑक्सीजन का मास होता है 16, ये अपने नंबर है बाय टोटल नंबर 16 प्लस m, क्योंकि m का मास हमें पता नहीं है। अच्छा, ये हो जाएगा 57.1%। और ये कैसे आता है, जब आप इस टोटल मार्क्स जो आपके आए बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, जिसने मतलब मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100%, ये होता है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप चुपचाप क्या करो, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, और ये 100 को यहां ले जाओ तो ये बन जाएगा 0.571 इन ब्रैकेट 16 प्लस m इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसको जब आप बेसिकली सॉल्व करेंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 12। ये वैल्यू आपके पास 12 के बराबर आएगी, अप्रोक्सीमेटली दैट विल कम आउट टू बी 12। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बात है सुनील सर, ये तो हमें समझ में आ गई बात। तो भाई मेटल का जो मास है वो तो 12 है ना, वो तो दोनों ऑक्साइड्स में 12 ही रहेगा मास, है ना। अब नंबर ऑफ एटम चेंज होते जाएंगे तो उस बेसिस पे वो बढ़ता जाएगा, बट रहेगा m, एक एटम का मास 12 ही रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ऑक्साइड क्या है, 72.7% ऑक्सीजन है। उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे भाई, लिखेंगे यहाँ पे m या लिखेंगे o। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो हमारे पास 2 ही है। अब आप इसकी वैलेंसी को, आपको पता नहीं कि इसकी वैलेंसी क्या है भाई, मेटल की वैलेंसी आपको कैसे पता सकती है भाई, यहां पर तो आपको, चलो आपने डिकोड कर ली कि फॉर्मूला MO है तो फॉर श्योर वैलेंसी 2 होगी। यहां पर आपको वैलेंसी थोड़ी पता है, क्योंकि सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला तो दिया ही नहीं है, वो तो आपको निकालना है। तो आपने इसको मान लिया x। अब ये x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 2 तो नहीं होगा, 3 हो सकता है, क्योंकि 2 तो पहले आ रहा है, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। चलिए क्रिस मारते हैं, क्रॉस मारते हैं, बन जाएगा ये M2O3। अब इसके अंदर भी ऑक्सीजन कितना है वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 72.7% ऑक्सीजन। यहां पर हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, अच्छा नहीं 3 नहीं है पर x है ना, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, x है ना, M2OX है। तो ये क्या कर लेंगे हम, x एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बाय x एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस हमारे पास 2 एटम्स ऑफ m है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज को, 72. अच्छा यहाँ 100% भी कर लीजिए, 72.7% विल कम आउट टू बी। अब ऑक्सीजन का मास आपको पता है भैया, एक एटम का 16x हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x प्लस हो जाएगा 2 क्रॉस m, m का वैल्यू 12 है तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 24 मल्टीप्लाई बाय 100%, परसेंट से आप परसेंट काट देंगे, है ना। इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.727 इंटू 16x प्लस 24 इज इक्वल टू फर्दर 16x। इसको आप सॉल्व करेंगे, मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, सो दिस विल कम आउट टू बी x इक्वल टू 4, है ना। तो भैया x इक्वल टू 4 आप यहां वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अब देखिए बच्चा आप देखिए इस चीज को,
ये m का वैल्यू 4, o का वैल्यू 2, ये वैलेंसी की वैल्यू है, ठीक है, ये हो जाएगा दिस। सो नाउ इफ यू विल क्रिस क्रॉस दिस विल कम आउट टू बी MO2। MO2 का है, MO2 का है, MO2 का है, अरे वाह, ये तो खेल गया क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा डी। देखिए डी आंसर है क्या, बिल्कुल डी आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका बहुत स्पीडी होना चाहिए ताकि आप इस चीज को कर सकें, ठीक है बेटा। चलिए, which among the following is not a postulate of Dalton's atomic theory, ठीक है। so atoms of different element have different masses and chemical properties. Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. All matter is made up of tiny particles called electrons. तो ऊपर के तीन स्टेटमेंट आप पढ़िए, ये तीनों ही डाल्टन की थ्योरी के हैं। उन्होंने ये कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका मास डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। नाउ अब ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, जो कि आपने ड्रॉबैक्स में पढ़ा है भाई। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास, आइसोबारिक स्पीशीज हमने पढ़ा है, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज ट्रू। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अब ये भी गलत है भाई। आइसोटोप्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। पार्शियली करेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका मास सेम रहे, तो ए और बी पार्शियली करेक्ट होती है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल 100% ट्रू, क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेटिस एंड महर्षि कनड का पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्टेन किया था, तो ये तीनों ही सही है। ये उन्होंने कब बोला इलेक्ट्रॉन, कभी भी उन्होंने डिविजिबिलिटी की तो बात ही नहीं करी ना, उन्होंने तो बोला कि इंडिविजिबल है। भाई ये तो कह ही रहे थे कि इंडिविजिबल है, एटम के अंदर कुछ है ही नहीं उसके अंदर, ये इंडिविजिबल है, इससे छोटी कोई यूनिट नहीं हो सकती। ये तो आगे चल के डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो ये वाला पॉइंट हमारा नहीं बोला था डाल्टन अंकल ने, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आया, है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए। Which of the following set of phenomena would increase in raising the temperature? भाई आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसमें से क्या बढ़ जाएगा। अब आपको ये चीज तो पता है कि आपके जो फेज ट्रांजिशन प्रोसेसेस होते हैं, मान लीजिए आप गए सॉलिड से, अभी मैं सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की बात ही कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आप इसको हीट करते हैं। अगर आप हीटिंग रेस कर देंगे, यानी टेम्परेचर, हीट एनर्जी ज्यादा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जो फेस चेंज पर नहीं होगी। मान लीजिए कि अगर मैं वहां पर बात लेटेंट हीट की नहीं कर रहा हूं, सेंसिबल हीट की बात कर रहा हूं, तो अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर अभी 10 डिग्री सेल्सियस है पानी का और आपने हीट एनर्जी दी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, ठीक है। अब आप वहां पर टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, 100 से भी अगर आप ऊपर लेके जा रहे हैं, हाँ, तो भाई स्टीम फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। या 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं और मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाऊं, तो फटाफट सॉलिड से आइस, अगर मान लीजिए सॉलिड स्टेट में आइस है तो फटाफट पानी बनेगी, पानी है तो और टेम्परेचर जल्दी रेस करता जाऊंगा तो फटाफट वो क्या है, गैस में कन्वर्ट होगा। सो ये चीज तो हमें पता है। तो इवेपोरेशन 100% हमारा बढ़ेगा, है ना। ये तो सुनील सर 100% आपका बढ़ेगा। और सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, भाई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना, दैट इज सब्लिमेशन। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सब्लाइम जल्दी कर जाएगा, फटाफट सब्लाइम कर जाएगा, ये भी बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, बेटा सॉल्युबिलिटी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, हमेशा याद रखिए सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स की बढ़ती है, गैसेस की डिक्रीज होती है। याद रख लीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस व्हाइल द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इंक्रीजेस, ठीक है ना। गैसेस का सॉल्युबिलिटी घट जाता है, ऐसा इसीलिए आपने हीट एनर्जी दिया, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी पहले ही ज्यादा है और फर्दर रेस कर जाएगा, दे विल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एस्केप, तो घट जाएगा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा फिनोमेना वुड इंक्रीज इन रेजिंग द टेम्परेचर। सो मेरे हिसाब से सिर्फ ए और बी बढ़ना चाहिए। तो ए और बी कहां है, ए और बी है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 100% ट्रू है ये। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमसे स्लॉट 1 में पूछे गए थे। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको एक ब्रीफ कर पाऊं, मैंने सारी चीजें तो अब मैं नहीं बता सकता ना इसमें, बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। Hello my dear students, I hope that your GTSC exam went very well and you are excited to know the answers of the various questions. I am Abha Pandey, your biology faculty right here at GoPrep. We are going to discuss the biology questions. So the very first question in the biology part was, lymph differs from blood in possessing.
So if we talk about lymph, basically it is also a fluid which is present in our body along with the blood. Okay, so if we talk about what happened, the blood is basically red in color because of the presence of the hemoglobin, which is the constituent of the which consists of the hemoglobin, that is the red color pigment. Now if we talk about the lymph, they do not have RBC. तो बच्चा जो lymph होता है ना, उसके पास red blood cells नहीं होते हैं, ठीक है. What they have WBCs. Okay, so basically lymph is the fluid which flows through the lymphatic system. It is basically clear to white fluid which is specially made up of WBCs. कौन सा WBCs? WBC mainly WBC lymphocyte. So yes, the correct answer will be that the lymph differs from blood in possessing only WBC, क्योंकि lymph में बस WBC होता है, while the blood have RBCs and WBCs both. So the correct answer is the option A. Moving to the next question, chlorenchyma are. So the word chlorenchyma comes from the word chloroplast. Okay. So what are the chloroplasts? Chloroplasts are the green plastid which consist of a green color pigment known as chlorophyll. So yes, chlorenchyma are these parenchyma which contain large number of chloroplasts. That's why they are called as chlorenchyma. So the correct answer will be, and the options are as such: tissues with this with having irregular cellular thickening. No, they do not have cellular thickening. They have no intercellular space. As I told you, the chlorenchyma is a type of parenchyma. They have intercellular spaces. They have large air spaces to provide buoyancy. No, that is erenchyma. Erenchyma tissues have large air spaces to provide buoyancy. Now, yes, tissues, they are the tissues that contain large number of the chloroplasts. So option D आपका correct option होता है. Next question. You are aware of the polio eradication program in your city. Children are vaccinated because. So bacha, if you talk about the concept of vaccine are basically the weakened or dead pathogen or some toxin from the pathogen. So when they enter inside our body, what happens? They work as antigen, and our body produce antibody against them. Okay, which means they build the immunity of the body. They never, and they do not kill the polio causing microorganisms. Vaccination, it creates immunity. Okay, and it is not like that it prevents the entry of the polio causing microorganism. It creates the immunity inside the body. So hence the correct option will be option C. Okay, it's not like that कि vaccine है तो vaccine can kill बाहर भी है वो kill. No, it creates immunity. Antibodies kill polio causing microorganisms, okay, which are found by the antigen. Okay, so the correct answer will be option C. Moving to the next question. A long tubular outgrowth from a nerve cell which conducts impulse away from the cell body term as. So if this is cell body, so from the cell body there is a long tubular extension. This long tubular extension is known as axon. Okay, so this is basically the axon. From the cell body two processes arises. One is dendrite, this one, and the large one is known as axon. Okay, so now the question is saying long tubular outgrowth. It's talking about the long tubular outgrowth which conducts impulse away from the cell body. So the flow of impulses is in this way, from dendrite to cell body to axon. So the correct answer will be option B, that is axon. I hope that you marked it correctly. Next question. The endoskeleton and the exoskeleton of various animals are formed from. So basically the endoskeletal and the exoskeletal system of the various animal consist of the carbonate ion. Okay, so the correct answer will be the carbonate salts. They consist of the carbonate salts. So the correct answer will be option A. Moving to the next question. Soil fertility is lost due to. तो अगर हम बात करते हैं बच्चा एफॉरेस्टेशन की, ठीक है,
afforestation basically means planting more tree. Now अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की. द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग क्रॉप रोटेशन. तो बच्चा अगर हम ज्यादा ट्री प्लांट कर रहे हैं ऑब्वियसली वो सॉइल की फर्टिलिटी तो लूज नहीं कर रहा है. अगर हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं दैट इज द next option, that is the crop rotation. So we all know that the crop rotation is a natural way of making the soil not like basically it does not allow the soil loss one type of nutrient. It tries to maintain the nutrient constant of the soil. Now if you talk about the third option is known as soil erosion, which refers to the wearing away. जो अपने top soil होती है ना उसका निकल जाना because of the various activity, and this causes the loss of the soil fertility. क्योंकि जो ऊपर की layer है वो तो निकल गई. So the बच्चा correct option C हो जाता है. Next question, which one of the following is a deficiency disease? So the give options are pneumonia, malaria, goiter and tetanus. So if you talk about the deficiency disease, जो कि किसी की कमी की वजह से हो रही है, किसी मिनरल की, किसी विटामिन की. Okay, now so अगर हम given option की बात करते हैं, in given option pneumonia, malaria, tetanus, they all are caused by pathogen. So they are basically they are caused by pathogen. Now if you talk about the goiter is basically the swelling of neck which occurs due to the hyposecretion of the thyroxine hormone by the thyroid gland. अब thyroxine hormone का secretion कम क्यों हो रहा है? Why there is hyposecretion? Because of the deficiency of iodine. अगर iodine की deficiency होती है तो thyroid gland की working पे affect करती है, and there is a hyposecretion of the thyroxine hormone. So yes, goiter is a deficiency disease. I hope you like the question and you marked them correctly. Now you can discuss your mathematics part. Good luck, all the very best to all of you. Hello everyone, very warm welcome over here in Go Prep, where we are discussing GTSC Talent Search, Go Prep Talent Search Examination Slot 1 Mathematics paper over here. So we'll be discussing it thoroughly, and we'll be going through all the questions you went for mathematics over there. I hope आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया है. You prepared well and you rocked this examination. Definitely we'll be solving it thoroughly and we'll be discussing each of the question over here. Yeah. So we are dealing mathematics part, as I already told you. First question it is PQR and STQ. PQR and STQ are equilateral triangles. Let's say this is PQR, right? It is equilateral triangle. Then we are having STQ. S is midpoint of QR. So S is over here, STQ. T is over here and this is Q. Right? So these are the two equilateral triangle. One is this and one the entire one. Now, if it is equilateral triangle, let's say the side is A. If it is A, then it will be A by 2 for sure. Right? Now, if we are talking about areas, area of the bigger triangle, that is root 3 by 4 A square. And area of the smaller triangle, that is STQ, it is root 3 by 4 A by 2 whole square. Now we need to find out the ratio of these two, and that will be coming out as 4:1. Yes, that will be coming out as 4:1. It is very easy question. I guess सबने अच्छी तरीके से attempt कर लिया होगा. Yeah, so answer will be coming out as option 1. Then in the second question they are asking for the graph of this particular linear equation. It is given to us. इसका graph पूछा है. Now what we'll be doing, we'll be simply keeping x equal to 0 to find out the y-intercept. If we are keeping x equal to 0 over here, we'll be getting y is equal to 8. We'll be getting y is equal to 8. Similarly, if you are putting y is equal to 0, we'll be getting 2x is equal to 8 and x is equal to 4. So that this line is definitely passing through 0, 8 and 4, 0. Right? So there is only one option in which line is passing through 4, 0 and 0, 8. That is option A over here. Yes? Next. Question number 3. You need to find out the value of x over here. Right? You need to find out the value of x accordingly. So what I'll be doing, I'll be simply taking this 3 in the other side. If you are taking 3 in the other side, we'll be getting minus of this expression. Minus of this expression is equal to, let's say I'm giving this expression as y. So minus y is equal to 3 by 2 minus 3. Yeah. Now y is equal to 3 minus 3 by 2.
3 minus 3 by 2, that is again equal to 3 by 2. It means this entire expression, that is 1 by 1 plus 1 by 1 minus x, that is 3 by 2. Now, if you are reciprocating it, you will be getting 1 plus 1 minus 1 by 1 minus x, that will be 2 by 3. Yeah, that will be 2 by 3. Again, I am taking this 1 that side, will be getting 1 by 1 minus x is equal to minus 1 by 3 over there. Again, if we are reciprocating, we'll be getting 1 minus x is equal to minus 3 in that case. So from here, we'll be getting x is equal to 4. Yeah, from here, if you are solving this equation, we'll be getting x is equal to 4. Very easy question. You can solve it by taking successive LCM also over there, but it is obviously that will be a lengthier way to solve the question, lengthier approach to solve the question, right? So simply you'll be getting the answer as option A. And you can go by the option as well. You can put the value of x as 4, 3, 1 by 3 and 2, and you can cross check it also, right? From there also you can solve the question. Yeah. Next, find the value of x and y from the given figure. Some data is missing. It is L1 and L2. They are parallel lines over here, right? L1 and L2, as already it is represented by arrow, so that's why they are parallel, right? So they are parallel lines. Now, if they are parallel lines, then x and 150, they are corresponding angles over here. It means x will be equal to 150 degree for sure, because they are corresponding angles. Yeah, they are corresponding angles. Now if we are talking about, let's say this angle is z. If this angle is z, then we know that y is equal to z. Yeah, y is equal to z because they are alternate angle. Y is equal to z, that is alternate angle, and we know that z plus 85 is 180. So basically y plus 85 is 180 degree, right? Now from here, if we are solving, it will be coming out as 95 degree. Y is 95 and x is 150. We'll be getting answer as option A again in that case. Yes. Next question, question number 5 we are having in front of you. So how we supposed to solve this question? Either we'll be expanding it properly. If we are expanding it, it will be too lengthier again. So how we can solve this? We can solve it like we can assume capital A as small a and capital B as B plus C minus D. Yeah. So from here, this expression will become A plus B whole square. Similarly, minus of this expression will become A minus B whole square. Yeah. Now if you are solving it, you will be getting A square plus B square plus 2AB minus of A square plus B square, A square minus B square minus plus 2AB, it will be there, right? So these two will be get cancelled out. We'll be getting 4AB in that case. So answer will be coming out as 4 into A into B plus C minus D. Yeah. So that is nothing but option B, that is 4A into B plus C minus D. We are simply using the identity, that is A plus B whole square, that is equal to A square plus B square plus 2AB, and A minus B whole square, that is A square plus B square minus 2AB. So from there we'll be getting the answer for sure. Yeah. Next, again it is really good question. We are having the wheel of horse carriage is 2 meter in diameter. Diameter it is given to us, and it makes 14 revolution per second. It is making 14 revolution per second. We need to find out speed in meter per second, right? We need to find out the speed in meter per second. So how are we supposed to solve? First of all, we need to calculate ki bhai, in 1 second how many revolutions are there and how much distance it is covering, right? So in one revolution, it is covering distance 2 pi r, which is equal to its circumference. Obviously, in one revolution, it will be covering the distance equal to its circumference. So that will be, in one revolution, it is going up to what? In one revolution, it is 2 into 22 by 7 into r over here is 2 by, diameter is 2, so r is 2 by 2. Yeah, so basically we are having 44 by 7 meter. Yeah, itna distance, this much distance it is covering in one single revolution over there. Now in 14 revolution, how much distance it will be covering? In 14 revolution, it will be covering 44 by 7 into 14, that is 88. Yeah, that is 88 meter it will be going.
in 14 revolution, 14 complete revolution, it will be going up to 88 meter. Now they're asking for speed in per second, right? So per second it is having 14 revolution, it means it will be having speed 88 meter per second. So there is no option over there which is giving 88 meter per second over there. So answer will be coming out as none of the above. Yeah, so it is very easy question. The concept is that a wheel is covering a distance of 2 pi r in one single revolution over there, right? Then question number 27, or seventh question of our concern, how we supposed to solve? If V is the volume of cuboid, ABC and ABC are dimensions, S is surface area, then which of the following is correct for that? Now look, so let's say surface area, that will be 2 times AB plus BC plus CA. Yeah, correct? Yes, it is like that. And if you are talking about volume, it will be AB into C. Yes, volume will be AB into C. Now, what I'll be doing? I'll be simply doing volume by surface area, or surface area by volume, let's say. Let's say this is first equation, this is second equation. I'm doing first by second. Yeah, if I'm doing first by second, S by V will be coming out as 2AB plus BC plus CA divided by ABC. Yeah, or 1 by V will be coming out as 2 by S. If they are divided individually, we'll be getting 1 by C plus 1 by B plus 1 by A over there, right? So which option is correct? Option C is correct for that, right? 1 by V is equal to 2 by S into 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. Simply we need to divide the equation, nothing else, right? The formula directly we are knowing, that is volume is given by A into B into C, that is length into breadth into height, and surface area is given by 2LB plus BH plus HL over there, right? So likewise we can solve it easily. Next, which of the following is incorrect? Yeah, so how we supposed to solve? If A and B are two congruent figures, then area of A is equal to area of B. Obviously congruent figures are having equal area. Then it is given to us that a planar region, ऐसा कोई planar region है, let's say ऐसा कोई planar region है ना? This is rectangular part having area P, this is rectangular part having area Q. So T is basically equal to P plus Q, that is they are giving, yes, it is correct, right? Two figure having equal area must be congruent. No, it is not correct. It is not correct, obviously. A right angle triangle, let's say it is 2 into 3, 2 and 3. So area will be half into 2 into 3. Yeah, so that will be 3 unit square. Yeah, and also a scalar triangle may be having area is equal to 2 unit square. So it is not necessary that always congruent triangles are having equal area. There are other triangles also which are having equal area. So answer will be coming out as C, which is incorrect over here. Next, the bar graph given below shows the sales of books from 6 branches of a publishing company during 2 consecutive years, 2001 and 2000. This is 2000 diagram and graph, and this is 2001's graph, right? Now they are asking for the ratio of 2000. So 2000 में total sale का अगर मैं देखूं तो it will be 80 plus 75, 95, 85, 75, 70. So what we'll be doing, we'll be simply adding them all, 95, 85, 75 and 70. इतना sales हुआ in 2000, and if I are talking about 2001, it will be 105, 65, then we are having 110, 95, 95 and 80. Now we need to take the ratio of these two. That will be the answer for us. Yeah, that will be the answer for us, and that is nothing but option A, that is it will be coming out as 48 ratio 55. Yeah. Next, if an exterior angle is 60 degree and interior opposite angles are in the ratio 1:4, let's say this is triangle, this is exterior angle, it is 60 degree, this is x, then this will be 4x. It is given to us. We know that x plus 4x is 60 degree. Yeah, because sum of opposite interior angle is equal to exterior angle. So 5x is equal to 60. X will be coming out as 12 degree. Yeah, and if x is 12 degree, then this 4x will be coming out as 48 degree.
Yeah, so that is what they are asking for. It will be 12 and 48 degree. Very easy, very चुन्नू मुन्नू, एकदम बच्चों का खेल है. Yes, I guess आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर है, किसी भी तरह का डाउट नहीं है. Yeah, now they are asking for location of point 2,1. So here we are having 2 over here. Here is 2 and here we are having 1. So I'll be drawing a line here and this line. They are meeting at point E. So our answer will be E over there. That E is the point 2,1. Yeah. Distance from y-axis is 2. Distance from x-axis is 1. Yeah. That is what we are having definition of abscissa and ordinate. Yes. Next. If each of the side of the triangle is double, then percentage increase in their area will be. Again, very good question. Yeah. And you must have seen this question in your NCERT as well if you solved. Yeah, it is really good question basically. So, area of triangle is given by, according to Heron's formula, it is S minus A, S minus B into S minus C. Now if we are talking about if all the sides are double, it means sides became 2A, 2B, 2C. Yeah, all the sides are double, then semi-perimeter S dash will be equal to 2A plus 2B plus 2C by 2. Yeah, that will be nothing but A plus B plus C. Yeah, semi-perimeter is A plus B plus C in that case. Now, here S is A plus B plus C by 2. Here S dash is A plus B plus C by A plus B plus C only. So this S dash is nothing but 2 times S basically. Yes. So from here, if we are finding delta dash, then it will be 2 times S minus A. That is S dash minus 2A. S dash minus 2A. So that will be 2 times S minus A. Yeah, because S dash will be replaced by 2S and A will be replaced by 2A. Right. So 2 will be get common out of it. Similarly, 2 into S minus B, 2 into S minus C over here. Right. So from here we'll be getting delta dash is equal to 4 delta. है ना, इस triangle का जो area आएगा that is 4 times the area of the first triangle over there. Now, if area is 4 times, then percentage increase is 4 delta minus delta, 4 delta minus delta into 100. Yeah, so that will be percentage increase over there. That is 3 delta, 4 delta minus delta by delta into 100. That is 3 delta by delta into 100. So this will be get cancelled out. We'll be getting answer as 300% increase. Yeah, it is 4 times and percentage increase is obviously 300%. Yes. Next. P is midpoint of BC of a parallelogram ABCD. A parallelogram is there, that is ABCD. Let's say this is the parallelogram ABCD, and here angle BAP. P is midpoint of what? BC. P is midpoint of BC. Let's say this is the P. Now here it is given to us that, wait for a while. Yes. Now P is midpoint of BC parallelogram ABCD such that BAP, this angle BAP, that is this angle, is it visible? Okay, let me change the color. Yeah, so this angle basically it is equal to DAP. It is equal to DAP. It means these this AP is nothing but angle bisector over here, right? This AP is angle bisector. Now AD is 10. This AD is 10 centimeter. AD is 10 centimeter. Now then CD equals what? Then CD equals what they are asking for. Now bachcha log, how we supposed to solve? How we supposed to solve? If it is angle bisector, and we are knowing that AD is parallel to BC. AD, it is parallel to BC over here, right? AD is parallel to BC. Now if AD is parallel to BC, then this AP is transversal. This AP is transversal over here, and if it is transversal, then alternate angle will be equal, right? Angle DAP must be equal to angle BPA, because they are alternate angles, and if they are alternate angles, they are equal. We know that DAP is also equal to BAP. It means this angle is also equal to this angle over here, right? Because these two are equal, then obviously these two are equal. Now we are having ABP as isosceles triangle. Yeah, it is isosceles triangle over there.
And if it is isosceles triangle, then AB must be equal to PB. Yeah, AB must be equal to PB in that case. Yes, AB must be equal to PB. Now, PB is nothing but half of AD. Yeah, because this is 10, this side is also 10. If it is 10, then PB is 5. Yeah, so AB is equal to 5 in that case, and if AB is 5, CD is also 5 because opposite sides of a parallelogram are equal. It will be 5 in that case. Easy as that. But what you need to do is you need to know the concept of transversal line and parallelogram, that is opposite sides are equal in that case. Clear? Again, good question. Need to use some brain. But yeah, obviously I guess बहुत सारे बच्चे इसको clearly solve कर गए हैं. Next, which of the following is true with respect to the graph? Right? So line x equal to y passes through origin. Yes, 0, 0 is satisfying this line. It means it is passing through the origin. Then point whose x coordinate is positive and y coordinate is 0 lies on. X coordinate is positive, y coordinate is 0. Yes, obviously it will be lying on positive x axis. Yeah, it is lying on positive x axis over there. Right? Now, it is correct then. Then we are having 3, 2 lies above x. 3, 2. 3 is, let's say, somewhere over here. 2 is somewhere over here. 3, 2 will be here. This is 3, 2. Now 3, 2 is above x axis, correct, and it is right of y axis. It is also correct. Yes. So all the three options are correct. It means answer will be coming out as all are true. All are true over here. Like this will be solving this. Yeah. Easy है. I guess बहुत सारे बच्चे इसको clearly solve कर गए हैं. Now we are having px is equal to, I'm correcting it, 4x cube minus 2x square plus x minus 6 over there, right? And this is the polynomial and it is divided by x minus 2. Yes, we need to find out the remainder. So we know that if any polynomial p of x when divided by any linear polynomial x minus a, the remainder will be p of a according to the remainder theorem. Remainder will be p of a. So a over here is 2 and p of a will be coming out as 4 into 2 cube minus 2 into 2 square plus 2 minus 6. Right? If you are solving it, you will be getting as answer option C, that is 20. Clear? Easy question. If you are knowing the concept of remainder theorem, it will be really easy for you to solve the question. Yeah. Then the mean marks of 10 students are x out of 100 marks. Yeah. Yes. Wait for a while. Yes. The mean marks of 10 students are x. So mean of 10 student is x. It means total marks, if we are calculating, total marks will be 10x. अरे भाई एवरेज को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सबके मार्क्स आ जाएंगे ना, out of 100 marks. It is observed that 1 mark of student was 85 instead of 58, right? तो 85 था, 81 का 58 की जगह 85 लिख दिया. So now what will be doing? Now total will be get changed, right? That is x minus, I'll be subtracting 85, then I'll be adding 58. Yeah, because जो replace हुआ उसको change करना है. Now it will be x minus 27 in that case. Yeah, this is the total marks now. Yeah, this is the new total now. Now, if it is new total, if we are calculating mean will be equal to total by number. That is x minus 27 by 10. If you are solving it, sorry, 10x minus, it will be 10x, not x. Sorry, apology. It will be 10x minus 85. Will be from total only. I'll be subtracting 85. No, yeah. So it will be 10x minus 27 by 10. So if you are solving it, we'll be getting x minus 2.7. Yeah. So answer will be coming out as option B. That is x minus 2.7. Yes. For 36 number question, it will be x minus 2.7 in that case. Again, a polynomial is there, that is ax cube plus 4x square plus 3x minus 4, and another is x cube minus 4x plus 8. They leave remainder same. Their remainder are same when they are divided by x minus 3. Let's say this is f of x and this is g of x. Again the same question we have done previously. So remainder for the first part will be f of a, and remainder for the second part, that will be g of a, and they are equal. It is given to us, right? Now, so f of a if you are finding, that is f of 3 if you are finding,
f of 3 will be equal to g of 3 according to the Riemann theorem. We'll be getting a into 3 cube plus 4 into 3 square plus 3 into 3 minus 4, that is equal to g3, that will be 3 cube minus 4 into 3 plus a. Now you are having an equation over here in a. If you are solving it, you will be getting answer as option A. That is, A will be coming out as -1. Yeah, if you are solving it, you will be simply getting your answer as -1 in that case. Easy, एकदम बच्चों का खेल है, right? आप लोगों ने अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है तो definitely you will be able to solve the question easily. Next, a bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, yeah, now. So a bag is there. Let's say this is bag 1. This is bag. It is having 5 red ball and some blue balls over there. Right? Some blue balls over there. Now the probability of drawing a blue ball, that is nothing but blue balls by total balls. That is x by 5 plus x. It is double of drawing a red ball. That will be 2 times of red ball will be 5 by 5 plus x. Now, if they are equal, we are having x by 5 plus x is equal to 2 times 5 by 5 plus x. Yeah. So obviously the denominator will be get cancelled out. X will be coming out as 10 in that case. Yeah. Easy as that. Ekdam chunnu munnu. They are asking for number of blue balls. It will be coming out as 10 in that case. Yes, they are asking for blue balls only. Now, so answer is option B. That is that. Now, next. Question number 39. A is this and B is reciprocal of A, then find the value of this, right? So if B is reciprocal of A, B is basically equal to 1 by A, that is 1 by 7 minus 4 root 3. Now if we are reciprocating it, what will be getting? आप लोग इसको rationalize कर दो, it will be 4 root 3, wait for a while. B is equal to 1 by A, that is 1 by 7 minus 4 root 3. If we are rationalizing it by 7 plus 4 root 3, divided by 7 plus 4 root 3. So in the numerator we'll be getting 7 plus 4 root 3 and in the denominator we'll be getting 49 minus 48. Yeah, in the denominator we'll be getting 49 minus 48, that is 1. So B is basically equal to 7 plus 4 root 3. Now here we are having A square plus B square minus 7AB over here, right? A square plus B square minus 7AB. We can write it as A plus B whole square minus 9AB. है ना, प्लस 2ab किया माइनस 2ab किया, प्लस 2ab किया, we'll be getting a square plus b square plus 2ab, that is a plus b whole square minus 9ab, and divided by we are having a square plus b square plus 2ab, that is nothing but a plus b whole square. Yeah, so basically what we'll be getting over here, we'll be getting a plus b. If we are doing a plus b is 7 minus 4 root 3, 7 plus 4 root 3. Yeah, so 4 root 3 will be get cancelled out, we'll be getting 14 over here. Yeah, so it is nothing but 14 square minus 9 times AB over there is A plus B, A minus B, that is 49 minus 48, that is 1 square only, right? Divided by, we are having A plus B again, that is 14 square. So if you are solving it, we'll be getting answer as 187 by 196. Yes, option will be coming out as 187 by 196 in that case. Easy again, but the thing is, you know the concept, you should know the identity over there, right? Next, again, we are having the value, we need to solve this surds over here basically. So it is 2 to the power 1 by 3, third root of 2, 2 to the power 1 by 4, that is fourth root of 2, and it is 2 to the power 5 by 12 in that case, right? 5 by 12, 32 is nothing but 2 power 5, so it is 5 by 12 in that case. Now if base are same, power will be getting added, that is 1 by 3, 1 by 4 plus 5 by 12. Yeah, now if you are solving it, LCM is 12, it is 4 plus 3 plus 5. Yeah, 4 plus 3 plus 5, that is nothing but 12. So we'll be getting 12 by 12, and that is nothing but equal to 2 power 1, that is 2 itself. Yeah, so we'll be getting answer as option A in that case. Very easy, very chunnu munnu. The entire paper of mathematics slot 1 of GTSC, we have discussed it thoroughly. I guess everything is well understood to you. Kisi bhi type ka, if you are having doubt, you can keep it posted in the doubt section over there. So till then, thank you everyone, thank you so much, and we have discussed all the questions successfully over here. I hope
you enjoyed the session and you liked it a lot. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Jai Hind, Jai Bharat. Hi guys, welcome to the aptitude section. My name is Rohan. Let's do a few questions. So for this question, you just have to find out the relation between these two, and the same relation will follow with a number here, right? We have to find this missing number. So you can see 26 is just one more than the square of 5. So this number should be one more than some other number square. So can you find out such number whose square is just one ahead of 60, just whose square adding 1 will give us 65? Yes, that will be 8. So 8 square plus 1 is equal to 65. So the number is going to be 8. Yes guys, C is the right answer. Let's go for the next question. In this question, you just have to look for where do aeroplanes fly? So they fly in the sky, and what is sky called? It's called C. So therefore we can directly write D. C is the right answer. Right, C. Okay guys. Now in this question, you just have to look very closely, right? In these type of questions, just make a diagram. Right? In a row of boys, Vishal is 7th from the left. So this is the left point. So Vishal is 7th from the left. So Vishal is here, and this is 7, right? 7 people there, right? And when they exchange, and Kamal is 11th from the right. So from the right, 11th position will be Kamal, right? So this is 11th, right? When they change their places, right? Kamal comes here, and Vishal goes there, right? So what is the position of Vishal? Vishal is 13th from the left. 13th from the left. So Vishal comes here, and this is 13th from the left. Can you find out the total number of people there? So 13 plus 11, right? So 13 plus 11 will give you 24. But is that the number of students there? No. We have calculated this position 2 times, right? 13th and 11th. You just have to calculate it 1 time, okay? So therefore we'll subtract 1 from this. So therefore there are 23 people there, okay? Out of 23 people, you have to find out what is the new position of Kamal from the right. So you have to find out what is the position of Kamal. Here is Kamal, new position. So what is this from the right? So how will you do that? So guys, we know this is 7 from here, and there are total 23 people. So we'll subtract 23 minus 7, you'll get 16. But now again, we haven't calculated one position, which we will add to it. Adding 1 will give us 17th, right? So this is the 17th position. There were 16 people from here. So therefore, what is the position of it? 17th, right? 16 people between 2. So yes, 16 plus 1 will be the position of it. So therefore, there are 17 people there, okay? So 17 is the right answer. Let's go for the next question, guys. If Friday falls on 15 September 2000, when will be the day of 15 September 2001? What will be the day? Guys, in case of leap years, there will be a problem. But we know a leap year is in February. So February has already passed, right? 2000 is a leap year. So we don't have to care about that. So we know 2001 was not a leap year, because leap year don't come in succession, right? So therefore, what you have to do is, guys, just try to understand. So a day repeats after itself after 7 days, right? So if the total number of days are a multiple of 7, for example, you have 49 days. So it's a multiple of 7, right? So 7, 7, 7, 7. So whatever the first day was, it will repeat itself after 49 days, right? Whatever the day it was before that, and whatever the day it was at the 49, right? It will repeat it after every 7 days. 7, 7, 7. So first Sunday, after that 7 days, then Sunday, then Sunday, then Sunday, right? So you have to understand that between 15 September 2001 and between 15 September 2000, there will be 364 days, right? Subtract 364 days, and we know that it is a multiple of 7, okay? So it is a multiple of 7. Just try to understand. If it is a multiple of 7, just check. Yes, it is a multiple of 7. So we know that the day will repeat until 15 September. Say पहले वाले दिन पर it will be the same day, Friday ही होगा. So on 15th, what will be the day? It will be Saturday. Okay, try to understand. If you are confused, just try to understand this. 10 minus 1 gives you 9. So there are 9 days between 1 and 10 where 10 is not included, right? So to get the 10th day, you have to add 9 plus 1.
So guys, this was 364 here. In this case, this was 364. So we know the same day will repeat at the 9th day. At the 10th day, that this is adding 1, will be Saturday. Right, this is just a mere example for this. Okay, so just try to understand 364 days. So therefore, it is a multiple of 7. So therefore, the day will repeat itself. But we have to find out what was the day on 15th. So we'll add 1, that is Saturday. Right, this will be Saturday. Let's go for this question. So again, guys, you just have to write again a new relation based on whatever symbols we have been given. Right, just look at this. So I have written all the symbols like this: 52 less than 4 is 52 minus 4 into 5 plus 8 divided by 2. You have to write it the same way. Now you have to apply BODMAS. So 8 divided by 2 will do it first, because according to BODMAS, divides comes first. So we'll divide it. So we'll get 4 here, and then they'll multiply. So minus 4 into 5 is minus 20. So now we'll just add and subtract. We'll get 36. Right, 36 is the right answer here. B is the right answer. Again, let's go for this question. So 5 people are standing in a line facing north. So everybody is facing north. 5 people. One of the 2 persons standing at the extreme ends is a teacher, and the other is a businessman. So 2 people are at the both ends. So one could be a teacher, another could be a businessman. This is the one case which I am taking. Let's take it. If it follows for every other instruction given in the question, this will be right. Okay. So a doctor is standing to the right of the student. So a doctor is standing to the right of the student. So what is the right? So maybe here is a student and here is a doctor, right? The doctor is standing right to the student, right? A clerk is to the left of the businessman. So clerk must be here, right? To the left of the businessman. This seems like a nice observation, right? Now, if it follows, let's check. The student is standing between the teacher and the doctor. The student is standing between the teacher and the doctor. Hence, this arrangement is completely correct. You have to find out, counting from the left, the doctor is at what place? Counting from the left, right? So we'll count it from here. 1, 2, and 3. So this is third. So B is the right answer. Now in this question, again, you just have to follow the complete pattern of this. So I'll directly point out to D. Just look at this. Why I'm pointing out to D, you'll understand very quickly. It says H, and H is related to G by this sign. Just look at this. It means H is the mother of G. So H is the mother of G. So this is the mother, and G is maybe a son or daughter, I don't know. Now just look at this relation, G and F. So this means G is the son of Y. So G is the son, right, and son of Y, son of father, so F. So G is the son of F. So this is the mother, this is the father. That means G is the son of these two, and these two are husband and wife, right? H and F. Now guys, just look at this. I and H, how are they related? I is the son of H also. So I is also the son. So I must be the son of both of them, right? So I is also the son of. So father of I is F, right? Again. Now J is J plus I. So again here. So from here, J is the sister of I. So therefore, J and I are brother and sister. So all of these are siblings, right? They are brothers and sisters. So who is the mother and who is the father? F is the father of J, I, and G. So therefore, which of this means F is the father of J? So of course, D is the right one. You will check through all these and you will find out D is the only suitable answer. In each of the following, you just have to find the odd one out. So these are rivers, and this is a mountain range. So therefore, this one is the odd one out. So C is the right answer. Again, the same thing, you have to apply, we have to convert all these, you have to interchange these symbols and write a fresh equation like this and apply BODMAS. So I have applied BODMAS here, so I have got 10, I multiplied it, then I got 30. 30 plus 10 minus 100 will be 40 minus 100, that is minus 60. So therefore, D is the right answer. Again, you have to complete the series. So see guys, 1 into 4 is 4, then you have to subtract 2. So 1 into 4 and then 4 minus 2, right? Then 2 into 4,
and then 8 minus 2. Whatever is there, you have to multiply it by 4, then subtract 2. 6 into 4 and then subtract 2. Subtract 2, right? Subtract 2. 22 into 4 is 88 and then you have to subtract 2. That is 86. So finally we have T as the right answer. So of course guys, so this was the end of this aptitude section. If you haven't attempted the test yet, you can do that in the coming slots. Bye guys. Take care.